Assalamualaikum teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time. Yeah, it's a story time. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them. Insha'Allah, Insha'Allah. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. Insha'Allah, Insha'Allah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them. Insha'Allah, Insha'Allah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. Story time! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear kids. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing? Alhamdulillah. Fine. Alhamdulillah. Okay then. Bismillahir Rahmanir Rahim. Let us start our Seerah story today. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. So what it means that there has certainly been for you in the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam an excellent pattern or model for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remembers Allah often. जी कौन सा बच्चा कोई एक बच्चा इसको लेगा? Any one kid? Okay, Saad, you can do that. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Very good, mashallah, barakallah feek. Beautiful. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Yes, anyone kid who will read this Darood. Iman, then you can take it. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
innaka hamidum majid. MashaAllah, barakallah feek. Ibrahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Very good. MashaAllah, barakallah feek. We will be doing our next episode today. That is episode 4 in our Seerah stories. So we will be discussing about Waqia Feel. What is that? The incident of elephants. ठीक है, आज हम कौन से इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे? वाक़या फील के बारे में बात करेंगे. ठीक है, और फील क्या होता है? एलिफेंट. तो ये वो वाक़या होगा या वो इंसिडेंट होगा जिसमें एलिफेंट्स का जिक्र आएगा. ओके. About 50 or 55 days before the birth of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this incident took place. ठीक है, ये वाक़या कब हुआ था? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए थे, और इस वाक़े के 55 और 50 डेज बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे. ठीक है, he was not born yet. There was a leader of Yemen and his name was Abraha. His name was Abraha. Okay, he was the leader of Yemen. Basically, he was from Habasha. He was not from Yemen. He was from Habasha, but he was the governor of Habasha in Yemen. He later on occupied the government, or you can say the rule, and then he became the ruler over there in Yemen. ठीक है, तो क्या हुआ था? ये बेसिकली हबशा से था, लेकिन इसने कब्जा कर लिया था यमन की हुकूमत पे. तो फिर क्या हुआ था? ये लीडर बन गया था अब्राहा. He planned to attack Kaaba. He planned that he will demolish Kaaba. वो काबा को तबाह कर देगा, गिरा देगा, ढा देगा. And he came for that purpose with a huge army of about 60,000. ओके, बहुत ही बड़ी उसकी आर्मी थे, जिसमें ज़ाहिर है उसके फौज के लोग भी थे और साथ एनिमल्स भी थे. But we will see first that why he planned to attack Kaaba. You know that Kaaba was the center of attention for all people around the world. They used to come here in Makkah. Due to Kaaba, Makkah was also the center of attention. लोग काबा की ज़ियारत करने और वर्शिप करने अल्लाह की आते होते थे. तो क्या हुआ? फिर मक्का सेंटर ऑफ अटेंशन हो गया. ठीक है, तो क्यों लोग आते थे? हज करने आते थे, वर्शिप करने आते थे, और ट्रेडिंग के लिए भी आते थे. ठीक है, जब वो आते थे तो ट्रेडिंग भी हो जाती थी, तो इनको प्रॉफिट भी हो रहा था. ठीक है ना. सो Makkah was the center of attention, or Kaaba was the center of attention, and people used to come here in Makkah for Hajj, for worshipping, and to do trading as well. This Abraha, he got jealous. Okay, he got jealous that even people from Yemen used to go to Baitullah. ठीक है, यमन से भी तो लोग जाते थे ना मक्का में. तो वो बड़ा जेलस हुआ कि ये सारे लोग उधर क्यों चले जाते हैं. So then he, as a solution, what he did, that he built a cathedral in his own country, that is Yemen. Okay, उसने यमन में एक कैथेड्रल बिल्ट किया. और कैथीड्रल किसे कहते हैं? चर्च को. ठीक है, आप ये इसको समझ सकते हैं, कलीसा, चर्च. ठीक है, जो क्रिश्चियंस की एक रिलीजियस बिल्डिंग होती है. सो ही बिल्ट अ चर्च and the name of the church was Kullais. उसने एक चर्च बिल्ड किया. ठीक है, कुल्लैस नामी, in Yemen. So he built this grand church, and he wanted now all the people around the world should come to this building, and so they will come to Yemen and we will get profit rather than Makkah. So this was his purpose. But what happened? That no were coming over here. I mean, people were still going to Baitullah. लोग तो अभी भी बैतुल्ला जा रहे थे, अभी भी मक्का जा रहे थे, अभी भी काबा जा रहे थे. तो इसलिए इसका पर्पस पूरा नहीं हुआ. तो फिर इसको और ज्यादा गुस्सा आया. ठीक है, he got angry, and then Abraha, he planned to demolish Kaaba finally. So for that he prepared huge army, okay, of about 60,000 people, and there were animals as well. And of course ये वाक़या फील है, तो इसमें एलिफेंट्स भी थे. ठीक है ना, और एलिफेंट्स उसके बहुत स्ट्रॉन्ग थे. Let us understand this event by or with the help of
a surah in Al-Quran, that is Surah Al-Fil. In Surah Al-Fil, that is surah number 105 of Al-Quran, in its ayah number 1, what Allah subhanahu wa ta'ala says, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. What Allah subhanahu wa ta'ala says, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Have you not seen, that is, have you not noticed, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayfa, कैसे, फ़अला किया किसने, रब्बुका आपके रब ने, बि अस्हाबिल फील एलिफेंट्स वालों के साथ, ठीक है. Have you not seen or have you not noticed or have you not pondered over that how your Rabb has done to the companion or the people of elephants? Okay, so who will decide this? Yes, Umama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Very good. Mavish. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Very good, mashallah. Aruj, now you can try. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Very good, mashallah. Hamza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Very good, mashallah. तो ये इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने क्या नोट नहीं किया, आपने गौर नहीं किया कि आपके रब ने क्या किया है फील वालों के साथ, हाथी वालों के साथ, एलिफेंट्स वालों के साथ क्या किया. तो अब हम देखते हैं कि क्या किया. असल में अब्राहा ने ह्यूज आर्मी तैयार की, ठीक है. अब्राहा prepared huge army. There was animals as well in it and there were elephants as well. These elephants were very strong. ये बड़े strong से elephants थे और इनका नंबर आता है 9 और 12, ठीक है, कि या ये 9 थे या 12 थे. And there was one elephant, he was Mahmud. I have shown it with the one that is standing at front. Its name was Mahmud. It was the elephant of Abraha. Okay? Abraha का elephant कौन सा वाला था? ये वाला Mahmud. ठीक है, उसका नाम था महमूद. और ये चलना शुरू हुए, इन्होंने सफर शुरू किया करते करते करते. और आपको पता है जो मक्का वाले थे ना, उन्होंने ज्यादातर तो एलिफेंट्स देखे ही भी नहीं थे. कितनी स्ट्रेंज सी बात लगती है. क्यों नहीं देखे हुए थे? क्योंकि ट्रेडिंग करने तो चंद एक लोग जाते थे ना, जो कारवां बना के जाते थे तिजारत करने, जो दूसरे सिटीज दूसरे कंट्रीज में. तो उन्होंने तो शायद देखा हुआ, जो यमन गए हुए हों, शायद पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने देखा हुआ हो. लेकिन जो बाकी कॉमन पीपल थे मक्का के, तब ऐसे थोड़ी होता था एक पिक्चर लेके एलिफेंट की कहीं भेज दो. तो जब वो मक्का आए तो सब लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए. एक तो इतनी बड़ी आर्मी, ऊपर से एलिफेंट्स तो उन्होंने देखे भी नहीं थे, तो वो तो जाहिर है डर गए होंगे. So these Makkah people, they had not seen elephants before because mostly few people used to go for trading to other cities or other countries. So they had not any experience of seeing this animal. They had mostly seen camels and other common animals of Makkah. फिर क्या हुआ जब उन्होंने अटैक शुरू किया ना, before attack, what they did, what Abraha did, maybe it was his tactic or a war trick. So what he did, that he occupied like 200 camels of Abdul Muttalib. And who was Abdul Muttalib? Yes, Munzir. The grandfather of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes, he was the grandfather of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So Abraha, it took about 200 camels of Abdul Muttalib कि उनको गुस्सा दिलाने के लिए, अब्दुल मुत्तलिब को एंग्री करने के लिए कि इसको गुस्सा आएगा, थोड़ा लड़ाई शड़ाई हो जाए फिर. So what Abdul Muttalib did, that Abdul Muttalib said that give me my camels back. उन्होंने कहा मेरे camels मुझे वापस कर दीजिए. तो Abraha got astonished. He said that I am disappointed, Abdul Muttalib, that you have concern about your camels, but you are not concerned about Kaaba. That is the house of Allah. When I said that I came to attack Kaaba, you have done nothing in response. And when I took your camels, then you are asking these back from me. कि अब camels मैंने ले लिया तो तुम इनको मुझसे वापस ले रहे हो, लेकिन तुम्हें बैतुल्ला की कोई फिक्र नहीं है, काबा की वो भी ढाने आया हूँ. So you know what Abdul Muttalib said? He said that Kaaba or Baitullah is the house of Allah. He will better take care of his house.
लेकिन मैं ओनर हूँ, आई एम द ओनर ऑफ माई कैमल, सो आई विल टेक केयर ऑफ दोस, कि मैं अपने कैमल्स का, अपने ऊँटों का मालिक हूँ, उनकी केयर मैं करूंगा, और जो बैतुल्ला है उसका मालिक मेरा रब है, तो वो उसकी बेहतर केयर करेगा। क्योंकि आप इसको गौर करें, इतनी ह्यूज आर्मी का अगर वो मुकाबला भी करते तो नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसलिए what they did, those Makkah people, they went to the mountains around and they left this Makkah city. मक्का सिटी का जो सेंटर था उन्होंने छोड़ दिया जहां बैतुल्ला था, और वो साइडों पे अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों पे चले गए, और उधर जाके they started doing इस्तिग़फ़ार, okay, they started asking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, and इस वजह से फिर अल्लाह ने ज़ाहिर उन्हें बचा भी लिया। So have you not considered how your Lord dealt with the companions of the elephant? In the second ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. That is, kaydahum hoti hai unka plan, kisi ki चाल, okay? So have I not destroyed their plan? ठीक है, क्या मैंने उनका प्लान डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया, तबाह नहीं कर दिया, कि जैसे वो प्लान करे थे वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बिल्कुल ही उलट हो गया। So who will recite this? Did he not make their plan into misguidance? Aiza raise. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Very good. MashaAllah. Muzammil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Very good. MashaAllah. Barakallah feekum. Yes, Hamna will read now. Hamna, say with me. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Very good. MashaAllah. And Fakia, you want to say? Yeah. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Very good. MashaAllah. Barakallah feekum. Faz, now you can say. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. This word is not clear. The second word. Okay. Yaj'al. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Yes, very good. Jazakumullah khairan kaseera. Barakallah feekum. So, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, did he not, I mean, he, the Rabb, not make their plan into misguidance, or has he not destroyed their plan? उसने उनकी चाल को तबाह व बर्बाद नहीं कर दिया, ठीक है, तो वो तो वाकई कर दिया था। तो ये कैसे किया था? Let's see in the next ayah. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. What he did? He sent many birds, or a huge crowd of birds on them as a punishment. Allah Ta'ala ने उन पे बहुत सारे birds भेजे. तो कौन रीड करेगा इसको? अफान, सऊद. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Very good. MashaAllah. Barakallah feek. Abdul Bari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Very good. Yes, Asma, your daughter. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Very good. Ababil. Very good. MashaAllah. Barakallah feek. Good job. Ahsan Aftab. وأرسل عليه طيرا أبابيل. You need to repeat the second word. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Very good. MashaAllah. Jazakumullah khairan kaseera. Barakallah feekum. So, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. He sent a lot of birds, huge crowd of birds over them. Okay, so he sent on them the birds in flocks. And what those birds used to do? Those birds used to throw stones on them. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. Those birds used to strike them with the stones of hard clay. कौन से stones के साथ मारते थे उन्हें? Hard clay के stones के साथ उनको मारते थे, ठीक है? Sijil, that is the word, last word in this ayah, Sijil, that is referring to the stones of hard clay.
Those were made up of hard clay. Why they were made up of hard clay? So that जब वो लगे उनको जाके तो इतने जोर से लगे मिसाइल की तरह, ठीक है, और वो इतने फासले, इतने डिस्टेंस से तेजी से जब मारते थे तो वो उनको बहुत ज्यादा जोर के लगते थे और उसके बाद उनका बहुत ही बुरा असर हो गया. Who will recite this? Yes, उमामा बशीर. मुझे आपके साथ रिवाइज Okay, ठीक है. तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील. तरमीहिम बिहिजारतिन min sijil. Very good, mashallah, barakallah feek. भैया की ज़ैना को पढ़ा दे. जी ज़ैना, where are you? Yes, ज़ैना, start. तरमीहिम बिहिजारतिन min sijil. जज़ाकल्लाह खैर, बारिकल्लाह फीक. अलीना. तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील. Very good. But you have to stay on these meme and ba. Okay, the first word is ending on meme and then other is starting from ba. Now you have to stay here a little bit. And likewise, bihijaratin, after that there's meme. So you have to stay here like this. Tarmihim bihijaratin min. Okay, can you repeat it? ترميهم بحجارة من سجيل. Yes, it was better, but you have to stay a little bit more. ترميهم بحجارة من سجيل. ज़ाकल्लाह खैर, बारिकल्लाह फीक. So क्या हुआ? वो बर्ड्स क्या करते थे, उनके ऊपर स्टोन्स थ्रो करते थे और वो स्टोन बने हुए थे हार्ड क्ले के, ठीक है, बहुत सख्त मिट्टी के बने हुए थे, पक्की हुई मिट्टी समझ लें आप, तो उनको बहुत जोर के लगते थे. एंड देन फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, and he made them like eaten straw. That is, who made them? Allah subhanahu wa ta'ala made them like eaten straw. ऐसे जैसे खाया हुआ भुस होता है, जो एनिमल्स चारा खाते हैं ना, एनिमल्स जो घास फूस चारा खाते हैं और वो जब सारा मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, तो वो कभी आपने इमेजिन किया हो या भी कोई घास टूटी पड़ी हो सारी खेत में, तो वो बिल्कुल ऐसे हो गए. इट वाज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट कि कौन सा बंदा है और कौन सा एनिमल है. These were all destroyed and mixed up. Astaghfirullah, may Allah save us from bad ending and may Allah save us from any kind of punishment. Who will read this ayah? Fatima. فجعلهم كعصف مأكول. Ma'kul. Very good. MashaAllah. Barakallah feek. Okay, Daniel, read it. अपने فجعلهم فجعلهم كعصف كعصف مأكول. مأكول. Yes, we will give it a little jerk because of Hamza and Sukoon on the Hamza. Okay? Inshallah. Jazakallah khair. Barakallah feek. Yes, Azka, now you can read. Ibrahim, you want to say? فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Very good, mashallah. So, Allah Ta'ala ने उनको बिल्कुल ऐसे भुस की तरह कर दिया. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. So, dear kids, whenever you read such kind of ayah in Al-Quran where Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning about any punishment for any nation, then we should ask protection from Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah save us from bad ending. Ameen. Where this event took place? This took place in Wadi Muhassar. Where? Wadi Muhassar. So, where this wadi was? This Wadi Muhassar was between Muzdalifa and Mina. ये मुज़दलिफा और मिना के दरमियान में ये वादी है, ठीक है, जहाँ ये इवेंट हुआ था, वाक़या फील हुआ था, ठीक है. और चूंकि यहाँ पे अल्लाह का अज़ाब आया था, पनिशमेंट आई थी, इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू से टू दी सहाबा दैट व्हेनेवर यू क्रॉस दिस वैली, क्रॉस इट immediately.
ओके जल्दी से गुजर जाइए इसमें से, क्योंकि जिस जगह अल्लाह का अजाब आया होता है वहां से जल्दी से गुजर जाते हैं, ठीक है। This huge army and the elephants, from where they came from Yemen to this place near Makkah, Wadi Muhassir. The city of Yemen was Sana'a, from where they came. So due to this incident of elephants, this year was named Amul Fil. इस ईयर को फिर क्या कहा जाने लगा? Amul Fil, that is elephants वाला साल. Okay, the year of elephants, the year of the elephants. ठीक है, और उस दौर में कैलेंडर नहीं होते थे. There was not any calendar system at that time, so they used to tie their time with some event, and then they used to say before event of the elephants and after this event of the elephants. Okay, so they used to refer it like that. About 50 or 55 days after this event, who was born? Who was born 50 or 55 days after this event? Everyone knows it. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yes, very good. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. MashaAllah, jazakumullah khairan kathira, barakallah feekum. So he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yes, he was born. And he was born in Rabiul Awal. That was the 3rd month of the year. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Okay? And this year was named as Amul Fil. And we know about his parents, but let's discuss. So Muhammad sallallahu alayhi wasallam was born in the family, and the father's name was Abdullah and mother's name was Amina. And Amina kept his name as Ahmad. ठीक है, आमिना ने, जो उनकी मामा आमिना थी, उन्होंने नाम रखा था अहमद, लेकिन मोहम्मद नाम किसने रखा था, ये कौन बताएगा? शाहिर गोना टेल. Abdul Muttalib. Yes, very good, जज़ाकल्लाह खैर. अब्दुल मुत्तलिब ने उनका नाम मोहम्मद रखा था. And you know, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, his father was died even before that, because उनके father गए थे तिजारत करने शाम. Okay, he went for trading to Sham or Syria. There he was died. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam was an orphan child. We were doing lineage of last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We will just revise the previous part because otherwise it may be hard for you. So we just will revise till Qusay, inshallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. So who will like to say it? Yes, Iman. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Very good, mashallah, barakallah feekum. You all have read it beautifully. Hamza, your hand is raised. Muhammad sallallahu alayhi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Very good, jazakallah khair, barakallah feek. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Very good, mashallah. सबने बहुत अच्छा इसका मतलब है याद किया है, mashallah. Ramin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Very good, mashallah. And keep memorizing this part. Homework. This week you have to practice Surah Al-Fil, okay? And send us. You can practice it and you can send us in your voice message, or if you prefer, you can write it on a page and you can send us in whatever way you prefer to do, either by writing or by your voice message, inshallah. Now we will do the Kahoot quiz. So get ready. Okay, kids, we are going to start soon. Bismillahir Rahmanir Rahim. Let's see the first question. The Arabic word for elephant is fil,
और जमल, अरबिक में एलिफेंट को, हाथी को क्या कहते हैं? फील या जमल? वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. The incident of elephants occurred dash. When it occurred. अब ध्यान से जवाब दीजिएगा, okay? 50 or 55 days before Prophet sallallahu alaihi wasallam's birth, or 5 days before Prophet sallallahu alaihi wasallam's birth. When it took place. Okay, good job, dear kids. Next is Qulais was the name of a dash in Yaman. Masjid और church. जो कुलैस मैंने आपको नाम बताया था, ये किसका नाम था? ये एक चर्च का नाम था या एक मस्जिद का नाम था? Choose the correct option. Qulais was the name of a dash in Yaman. Was it a masjid or was it a church? Next question is, choose the name of the leader of Yaman who came to attack Kaaba. क्या नाम था उस लीडर का, यमन के लीडर का, जो कि काबा को डिस्ट्रॉय करने आया था, अटैक करने आया था? कुसई, अब्दुल्लाह, नजाशी और अबरहा. Next question is, true or false? Allah subhanahu wa ta'ala sent parrots on Ashabul Fil. Is it true? वो जो birds थे वो parrot birds थे जो अल्लाह ताला ने भेजे थे. Allah subhanahu wa ta'ala sent parrots on Ashabul Fil. Is it true or false? False. Next question is, which word is used for birds in Surah Al-Fil? Surah Al-Fil में birds के लिए कौन सा लफ्ज यूज हुआ है? तदलील और तोयरन अबाबील. Next question is, this word sijil were which kind of stones? सिजील किस तरह के stones के लिए लफ्ज यूज किया अल्लाह ताला ने कुरान में या सूरतुल फील में? These were the stones made up of soft clay or the stones made up of hard clay. Choose the correct option. True or false? Allah subhanahu wa ta'ala made them like eaten straw. Yani Allah subhanahu wa ta'ala made those attackers like eaten straw. Is it true or false? Allah ने उनको ऐसे कर दिया जैसे खाया हुआ भुस होता है. So it was true. Next question. Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them in which valley? What was the name of the valley? Valley वादी को कहते हैं, ठीक है? Was it वादी मुहस्सर or was it वादी तुवा? Yeah, it was वादी मुहस्सर. Next question is, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Amul Fil. He was born in Amul Fil. वो पैदा हुए थे आमुल फील में. What does आम refers here? What does आम means? अब यहाँ पे आम का क्या मतलब है? Was it a day or a week or month or year? Was it day of elephants, or week of elephants, or month of elephants, or the year of elephants? अल फील तो एलिफेंट को कहते हैं ना, आम किसको कहते हैं? Day, week, month or year? Alhamdulillah, our quiz is end. So let's see the result. Alvina on third, Hamza on second, and Rami Fatima is the first. And they were runners up to, MashaAllah, Jazakumullah khairan kathira, Barakallah feekum. Good job. Now you will be seeing your homeworks. Yes, Sister Saida. Yes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum alhamdulillah. Gee, kids, very well done job, mashallah. It's turn to look your homework. Alhamdulillah. Alhamdulillah, this time also हमने बहुत सारे बच्चों के homework receive किए, mashallah. So Muhammad Faz, Iman Mudassir, Fakiha Mudassir, Hamna Mudassir, Zaina, Abdul, Ali Ahmad, Barira, Aisha, Azeen, Ahsan, Aid, Shahir, Saad, Ramin, Umar Zishan, Aiza, Nashia. Barakallahu feekum. Jazakumullahu khairan kathira. So here is the homework list. MashaAllah, very beautiful design. And बहुत ही खूबसूरत drawing है. Good job, Muhammad Faz. Then Iman, MashaAllah, beautiful. So Fakiha homework as well, beautiful.
Hamna Mudassir, beautiful. And Zina sent us an audio message, her homework. Or Abdul, बहुत प्यारा है, mashallah. Very nice. MashaAllah, you all have done good job. Yes. Ali Ahmad also beautiful, neat and clean. Mashallah. Barira as well. Draw a beautiful tree. Aisha sent audio message and plus written as well. Azeen, So beautiful. yeah, you can show Azeen's again. She had mentioned something about birds Something. and that how they took care of the bird. So very good, Azeen. Mashallah. Hassan's work, yeah, so beautiful, colorful. Very good, mashallah. Shahir Saad, beautiful. All kids done beautiful job. And here also Umar Zishan, he was trying to help broken wing pigeon. Yeah. And is helping the pigeon by food and water. Very water. good. Aiza Reis. Yes. Aiza Reis also draw a beautiful tree. And Nashia also sent us her homework by audio. So kids, Jazakumullah khairan katheera. Well done. Good job, mashallah. You have done excellent work, mashallah. So this was the last week homework and you have seen your homeworks. Mashallah, these were beautiful. Barakallah feekum. And now we will end it with the end dua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear kids. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah Hafiz, teacher. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Alaikum assalam. Allah Hafiz.